Hi, good morning again. How are you? Hope all of you are fine. So we are live with another a very important, in fact, session today. Because in this space, I think we are working now for quite few years. There are very few startups and few entrepreneurs who have a very professional, ethical, and focused mindset about this industry. And Mr. Rajneesh Kunj is one of them. So I welcome Rajneesh to you on our platform. He is the founder of Hampa Wellness, one of the startups in this hemp category. However, they are having certain differentiating factors as well. आपने काफी सारी कंपनीज के बारे में देखा, हमारे प्लेटफॉर्म पे सुना, आप उनके फाउंडर से मिले, कुछ कंपनीज के मे बी यू आर यूजिंग मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स एज वेल. सो ठीक है, दिस इंडस्ट्री इज स्टिल न्यू. People will be starting, there will be most of the companies will be technically startups because this entire domain and entire industry is very new. But still, I think we need to understand the potential of this particular plant, that is hemp, the seeds, the leaves, which we are using in certain products and medicines. And today we'll be discussing with Rajneesh that how Hampa Wellness or how the products or medicines, whatever like they have in their bouquet, are different from the other several brands, companies, or whatever they are in the market. We need to understand that. And prior to that, Rajneesh, I will quickly request you to maybe introduce yourself in detail so that the people can know about you and why basically you thought to start this particular startup or your entrepreneurship journey with the plant that is hemp. So over to you, हाँ Rajneesh, जी. for this. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. I think whenever I have got the opportunity to speak to the audience through your platform, it has always been very worthwhile. उसका रीज़न है कि आई मीन आई पर्सनली आई सी यू एज द लीडिंग लाइट एज फार एज मेडिकल कैनबिस स्पेस इज कंसर्न्ड. और आपके थ्रू हमें जिस ऑडियंस को रीच करने का मौका मिलता है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कैटेगरी की ग्रोथ के लिए और हम्पा वेलनेस एज अ कंपनी और हम्पा ब्रांड की ग्रोथ के लिए. तो थोड़ा सा अगर मैं अपना जर्नी के बारे में बताऊं तो I'm basically a sales and marketing professional. I've been in on the corporate side for almost 20 years, working with large organizations, having gotten the opportunity to work on large brands. पिछले लगभग 6-7 साल से I would say I have been in more in a startup environment, having worked in companies which are a startup. और अलग अलग सोर्सेस की फंडिंग उन कंपनीज में रही है. 2 साल पहले आई गॉट पुल्ड इनटू दिस स्पेस बिकॉज आई फाउंड द अपॉर्चुनिटी वेरी वेरी एक्साइटिंग. हमें ऐसा लगा कि हेम्प का जो स्पेस है ये एक जिसको बोलते हैं कि एक सनराइज इंडस्ट्री की तरह है. It is not yet very large. There are a lot of companies which are trying to make a space for themselves, but I think opportunity massive hai. That is simply because of the kind of benefits that hemp has to offer. And I have said this many times in multiple forums and I will repeat it. हमें ऐसा नहीं लगता है कि हेम्प सिर्फ उस आदमी के लिए है जो कि किसी सीरियस एलिमेंट से सफर कर रहा है. यू नो देयर वी ऑफन टॉक ऑफ मेडिकल कैनबिस as the space where hemp is really proving to be beneficial, and I believe so. It has a lot of great medical benefits, but I think it goes beyond just that. We believe hemp is for everyone and anyone who is possibly living a busy life, and there are several stresses, multiple priorities, anxieties that come with that busy life, because of which you are not often able to live the life that you want to. You can think of it from a diet point of view, because you end up eating things which you do not really intend. You आपको पता है जंक है, लेकिन मतलब आपके पास में टाइम ही नहीं है, इसलिए आप you're just picking up and eating whatever comes handy. It could be about not being able to exercise as often as you want to, or as you plan. It's about juggling multiple priorities and somewhere losing that sense of balance in your life. So I think वो
उस स्पेस में हम हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो भी लार्ज सिटीज में रहने वाले लोग हैं, वो सब उस स्पेस में हैं जहां पर हम लोग इन सम वेज हम अपनी प्रायोरिटीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, और उसका इम्पैक्ट फिर हमारा हेल्थ के ऊपर में आता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो या इन सब चीज का एक कॉम्बिनेशन हो। आई थिंक दैट इज वेयर हेम्प कैन बी अ ग्रेट सोल्यूशन, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसके मतलब अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों यूजेस हैं। वो न्यूट्रिशन से स्टार्ट होता है, प्रोटीन बेनिफिट्स, गुड फैट्स, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारा डिजीज फाइटिंग, नेचुरल डिजीज फाइटिंग कैपेबिलिटी आपको देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हम लोगों वी ऑल्सो रियलाइज्ड एंड वी फील कि पर्सनल केयर में हेम्प का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, चाहे वो स्किन केयर हो या हेयर केयर हो। इट गिव्स यू अ यंगर लुकिंग स्किन, इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ, एक जेनरिक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और डेफिनेटली वेलनेस या मेडिकल कैनबिस के स्पेस में पेन मैनेजमेंट से लेकर के सेक्सुअल हेल्थ और स्ट्रेस, एंजाइटी या अलग अलग तरह के मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स या पेट केयर, कैंसर, सो देर आर मेनी मेनी डिफरेंट स्पेसेस जहां पर हेम्प का एक बेनिफिट है। और दैट्स द रीजन व्हाई वी बिलीव इट गिव्स very very comprehensive and wholesome wellness to someone, and not just a problem solution, not just a solution to a certain disease that one might be suffering from. So So these on were that, some of the yes, reasons, yeah, yeah. why we got interested in this category and we launched Hampa Wellness Doctor. Great, great. So on that note, Rajneesh, I would like to ask you, see, as you also know that there are still, it's at initial level, but there are now quite few companies who are working in this space, and everybody is claiming. We know the raw material is moreover from the same source, that is the, for example, the leaves or the seeds. हाँ जी, Most of the companies have some common sources, or there are very few sources from where the raw material is coming up, and it is like the plant is so readily available, so we hardly suspect any kind of duplicacy or any kind of uh, there are issues in the standardization, but still quality moreover is like fine, and most of the companies are using that only, but हम्म, still there can be difference in the manufacturing, there can be difference in the processing, there can be difference in the ultimately ratio, the potency they are putting up in the product, in the final हाँ product जी, of this particular herb. So my हाँ question जी, to you is, and basically, as we are a platform where we ethically, we intend to position or promote ethically, and everybody knows, and repeatedly we have have this disclaimer that we don't work on commission model, and all the doctors or all the professionals, by the way, who will be dealing with you through our platform, you and they are directly dealing, you know, and they also know that Indian Vedas does not have any kind of financial vested interest in any kind of dealing, so it's an ethical kind of business of doing in this country which we are doing. But on that note, we are still concerned about the quality. We don't want to expose any substandard or low standard companies to our network, because that is our duty to ensure. So on that note, I would like to ask you how you are ensuring the quality, how you are ensuring that your final products, be it hair oil, be it shampoo, be it medical range or whatever ingredients having the seeds or leaves or sometime both, how you are ensuring, or your team is ensuring that the quality is optimum, the end product is able to generate the efficacy which you people are claiming. So there are two, three questions in the entire bouquet of questions which I am asking you. हाँ जी, Maybe you can हाँ answer one by one. First, how you are ensuring the quality, the raw material, and in the end product. Second, how you are ensuring the product is well enough to maintain that particular efficacy which you are claiming through that product. These जी। at least scenarios, if you can clarify to our audience today. Thank you. हाँ, तो इसको इसको आई विल ट्राई एंड आंसर दिस इन टू पार्ट्स, लाइक यू सेड एफिकेसी एंड क्वालिटी आर दी टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन अ परफॉर्मेंस कैटेगरी। मतलब हम सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वी प्रॉमिस अ सर्टेन एफिकेसी टू द कंज्यूमर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट द प्रोडक्ट इज डिलीवरिंग ऑन ऑन दैट प्रॉमिस। तो अगर मैं क्वालिटी की पहले बात करूं तो क्वालिटी में right from the ingredients
to the final formulation, I think the products and the ingredients are tested at every level. सो हर एक जो इंग्रेडिएंट हमारी फॉर्मुलेशन में जाता है उसका एक एनालिसिस होता है, उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस अप्रूव होने के बाद में ही वो प्रोडक्ट इज यूजेबल इन दी फॉर्मुलेशन. सो दैट्स वन स्टेप. सिमिलरली जब फाइनल जो भी फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन के हिसाब से जब एक फिनिश गुड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद में वो फिनिश गुड का भी एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जनरेट होता है. और आफ्टर दैट इज फाउंड टू बी विद इन स्पेसिफिकेशंस, उसके बाद ही वो मार्केट में प्रोडक्ट रिलीज होता है. ये टेस्ट जो है ये सिर्फ हमारे लेवल पे या मैन्युफैक्चरर के या सप्लायर के लेवल पे नहीं होते. The Ayush department has its own protocols of ensuring a certain quality is maintained by the different brands. तो वो हर बैच जो एक प्रोड्यूस होता है वो बैच से सैंपल्स आयुष डिपार्टमेंट के पास में भी जाते हैं या उनकी सर्टिफाइड लैब्स में जाते हैं. वहां पर उसकी एक जनरल प्रोटोकॉल टेस्टिंग होती है. इनिशियली जब कोई भी फॉर्मुलेशन डिजाइन होता है या फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है तो उसके लिए एक स्टेबिलिटी स्टडी भी होता है टू इंश्योर there is over a period of time there is no deterioration of the efficacy of that product. So वो सारे पैरामीटर्स को कवर करने के बाद में ही एक प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के पास में पहुंचता है. So we are relatively sure by the time the product reaches the market that it meets our internal as well as external quality standards that are warranted by the Department of Ayush. So that is as far as the efficacy is concerned. Now, that as far as the quality is concerned. Now coming to efficacy, हमारा ये मानना है कि while we are a hemp focused company, the objective is not to peddle hemp based products to the consumers. The objective is कि consumer का जो भी problem को के लिए एक product बनाए वो problem resolve होना चाहिए. उसमें अगर एफिकेसी हेम्प से आती है तो वो हेम्प से आनी चाहिए. लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो कि उसको बूस्ट करने के लिए एक और सेकंड इंग्रेडिएंट या थर्ड इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है तो वो सेकंड और थर्ड इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट में होना चाहिए. वी शुड नॉट जस्ट बी सेलिंग हेम्प फॉर द सेक ऑफ सेलिंग हेम्प. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो पेन मैनेजमेंट में हेम्प या विजय एक्सट्रैक्ट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल at multiple levels, starting with interacting with the endocannabinoid system, how it impacts the mental makeup of a person, how it impacts what is typically now being called as anandamide. At the same time वो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करता है, वो पेन या एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज लेकर के आता है. लेकिन उसके साथ साथ देर आर, अगर जैसे हमारा आर्थराइटिस के लिए जो प्रोडक्ट है उसमें वी आल्सो एडेड थिंग्स लाइक अश्वगंधा या अर्निका या क्लव ऑयल, वेरियस वेसोडाइलेटर्स, पेपरमिंट, लैवेंडर, सिनेमन. तो ये सब प्रोडक्ट्स जो हमें लगता है कि प्रोडक्ट की एफिकेसी को एनहांस करते हैं, we've not shied away from including those ingredients in our formulation. So हमारा जो प्रोडक्ट है एक होलसम, अगर आर्थराइटिस का प्रोडक्ट है तो वो आर्थराइटिस के लिए सोल्यूशन देता है, ना कि सिर्फ हेम्प को आर्थराइटिस का एक सोल्यूशन बनाता है. So that's, I think, a very important point that we see as a potential differentiator and how we believe our products are superior in resolving a consumer's problem. अगर हम at a core level hemp extract की ही बात करें तो staying within the realms of what is allowed in Ayurveda, we've tried to use a more standardized, a more optimized CBD THC ratio extract, जो कि एक better performance देता है. और throughout the year in different season, no matter what time the crop has been picked up, एक standardized solution जो है वो patient को मिलता है. And as a doctor also you feel more confident that if I'm prescribing this product, then I know what results to expect from it. So I think ये सब कुछ factors हैं जो कि हमने ध्यान में रखे हैं to ensure a certain delivery of promises. There are also different products for different needs. So for example arthritis अगर है, initially अगर एक patient आ रहा है कुछ severe symptoms के साथ में तो उसको सोल्यूशन अलग है. लेकिन अगर एक पेशेंट है जो कि टू अ सर्टेन लेवल उन्होंने प्रॉब्लम को टैकल कर लिया है, अब आप मेंटेन करना चाहते हो उसको, तो वो मेंटेनेंस के लिए अलग प्रोडक्ट है.
ओरल प्रोडक्ट्स अलग हैं और टॉपिकल प्रोडक्ट्स अलग हैं. तो आई थिंक द फोकस इज टू हैव अ होलसम सॉल्यूशन फॉर द कंज्यूमर्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. Right. There is one question also that have you done any research by taking volunteers or patient? Is there any data? I think let me just answer this first and maybe you can add on Rajneesh. Mr. Satyendra Singh has asked this. So see, Mr. Singh, actually the research in volunteers and patients, the regulatory requirement is not there till now in this segment, that is Ayush. So you can prepare with the references and take it forward. However, I agree with you. There has to be certain data and there has to be certain document if we are claiming anything. So they have just started the journey. They definitely will be doing certain these kind of activities as they move on, because everything requires a significant amount of investment also to take it forward in an ethical way. But yes, I think hopefully Rajneesh, you and your team should be having this point noted in your action items, that you should get some good data so that it will be scientifically validated and ethically we can claim also about that as well. Haji, again, through this forum, I would also like to invite the doctors to participate with us in terms of doing these case studies where we validate what kind of results we get with actual patient concerns, so that all of us as a community get more confidence in the results that you can get in general with hemp based products, and in particular with the Hampa wellness formulations. Nice, nice, great. So I think it was a nice introductory session. I don't want to keep it intentionally for more than 20 minutes, because people can see afterwards as well. They want to know about you, about your company. We can share this to all the people, because sometimes we are also getting these queries that where are we can have good companies so that we can have good products for the patients. Ultimately, we all want to heal them, and the general community also. We are starting the B2C as well now. Today also we have published the news. We were there in our Gurgaon center launch, by the way, the certified center which we are starting now, and we have a target of doing 1,000 in this year. So we are Hmm. getting good response already. More than 100 are directly connected to us, and we'll be certifying them in this maybe next 1 month, and gradually we'll be taking it to the entire country. And what we need to convey to all the people who are connected to us and associated with us is, see, you yourself judge, and you very well mentioned this, and I appreciate you for offering case study work to all the doctors who are connected to us. तो आप सब लोग जो इस सेशन को देख रहे हैं, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आप चाहते हैं कि आप हम्पा वेलनेस और रजनीश जी की टीम के साथ कनेक्टेड हों इन टर्म्स ऑफ डूइंग केस स्टडीज, आप अपना केस स्टडी कर सकते हैं डेफिनेटली। जो भी आप केस स्टडी करना चाहेंगे उसका एंटायर मेडिसिन और प्रोडक्ट जो भी रिक्वायर होगा वो कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है फॉर दैट पर्टिकुलर केस स्टडी, जो एक एथिकल रिक्वायरमेंट भी है। सो यू कैन डू दैट, यू कैन, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा, यू हैव टू क्विकली फिल अप द डेटा। उस डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगा, वो आप फिलअप करके कंपनी को सेंड कर दीजिए। इसमें अगेन इंडियन विद्यास इज जस्ट इन्वॉल्व टू फेलिसिटेटिंग। इसमें जो भी एक नॉमिनल एक्सपेंस या जो भी रहता है वो आप डायरेक्टली रजनीश जी से उनकी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड with them directly. We want more and more doctors and professionals to connect with them and promote this ethical way of building up a product, that is case study, data, document. आपका कोई नेगेटिव फीडबैक भी है, आपको कोई चैलेंज मिला है प्रोडक्ट में, कुछ भी, आप प्लीज उसको जरूर शेयर करें रजनीश जी और उनकी टीम के साथ, हम्पा वेलनेस के साथ, सो दैट दे कैन इम्प्रोवाइज if required for any product. We are, I think Rajneesh ji is open for that as well, right Rajneesh Absolutely. ji? खाली बिल्कुल पॉजिटिव सही। पॉजिटिव करनी चाहिए, नेगेटिव भी आएगा तो मतलब वट नहीं एवर नहीं, इज बिल्कुल देयर। बस नेगेटिव सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम और प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करते रहें. Great, great. I really appreciate your this mindset, and I think thank you all of you for joining again. We will be coming up with many more webinars and many more detailed discussion with Hampa Wellness, with their team, with the doctors who are started associating with them. They will be bringing, and we have a very important announcement now to conclude this session. This Saturday in Gurgaon, I think Rajneesh ji will definitely uh, uh, tell us about the venue and the exact location to all the listeners. So this हाँ. Saturday, if you are in Gurgaon, please connect with us. We are doing two events there. One is in the morning, we are doing an event in the RWA to the people, to the society, to the public, to create awareness about hemp and related. So if you are near 66 sector, I think 66, right? So like हाँ Rajneesh जी. will explain this. So you please, I will be there as a speaker.
for that session. If you are a non-medico, please connect us in that session. And if you are a medico or a professional also, apart from Ayurveda doctor, if you are a healer, if you are a any alternate healer related to any part of Ayush, or maybe allopathic doctor also for that matter, if you want to connect with us, if you want to know more about medical cannabis, hemp, why not? So we are doing a CME for the professionals and doctors and healers at afternoon at the same venue, around 1:30, 2 o'clock it will start. I will be there by 3:30. I have to leave for some other commitments. 3:30, 3:45 I'll be leaving. So from morning till 3:35 I will be there in Gurgaon on Saturday. So all of you can meet us, let us know. You can also walk in at any point of time at your ease as well. That will be a very good event, I hope. And Rajnishi, you can just quickly tell us about the venue. And हाँ जी. my team, I request the digital team to post all the details about that events also in the comment section of this live session. Like it will be a video technically after the live session. So you can, my team can quickly post that details as well of that event on Saturday, so that people can connect with Rajneesh ji, his team, and to me as well on Saturday. Thank you. हाँ जी. So this is at this place called Palm Terraces Select. Golf course extension sector 66 में है. This is a place which is very near to a large housing society called Palm Drive. This is our first attempt at reaching the audience and consumers directly and educating them about the benefits of hemp. So Dr. Juneja has very kindly agreed to be a speaker in that session. We are doing this in two parts, like you said, Doctor. First half is dedicated to residents और एनी नॉन मेडिको पार्टिसिपेंट्स. उसमें हम एक फ्री मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नाड़ी परीक्षण एंड कंसल्टेशन फॉर एनी प्रॉब्लम्स दैट एनीवन माइट बी फेसिंग. सेकेंड हाफ स्टार्टिंग 1:30, इमीडिएटली लंच के बाद हम लोग शुरू कर देंगे सेशन. सो वी इनवाइट द डॉक्टर्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. इट इज एट द सेम प्लेस, पाम टेरेसेस सिलेक्ट में, क्लब हाउस में हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं. Doctors are, we are inviting the doctors, and we would be extremely delighted if you can be a part of that session. I am 100% sure this will be a value add to everyone who participates, because we'll try and talk about hemp and its benefits for overall balance and harmony, and not just for a problem solution. And it would be a good forum for us to connect and take this conversation forward. Anyone can reach me directly on my phone number 8884422158. अगर कुछ भी query है या suggestions हैं या inputs हैं उसके लिए, या हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है care@hampawellness.com. We are always connected with our customers through that ID, and also through we address any query that comes. So yeah, very जी very लास्ट में thankful to you. लास्ट में एक चीज और बता दें, ज्ञान हमने हाँ जी. काफी दिया, बट अगर किसी को ज्ञान अच्छा लगा एंड somebody wants to, तो जो डॉक्टर्स हैं वो तो डायरेक्टली आपने कनेक्ट दे दिया एंड दे कैन कनेक्ट विद यू एंड टेक इट फॉरवर्ड. बट समटाइम्स देयर आर नॉन मेडिकल, समटाइम पीपल आर जस्ट वांट टू ट्राई योर वन प्रोडक्ट. और सो कहाँ कहाँ अभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड कहाँ कहाँ से पीपल कैन ऑर्डर योर प्रोडक्ट, सो थोड़ा सा और सर, बता अगर दीजिए. मैं अपना पूरा रेंज की बात करूं, विच इज न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, वेलनेस के सारी कैटेगरीज, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे. hampawellness.in के नाम से हमारा वेबसाइट है, इंक्लूडिंग दी प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन. तो अगर कहीं प्रिस्क्रिप्शन वाला कोई प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बिक सकता है. तो उसके लिए वी ऑल्सो टाइड अप विद सर्टेन डॉक्टर्स, कि अगर आपको कंसल्टेशन करना है तो आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके उसके बाद में रिकमेंडेड मेडिसिन आप खरीद सकते हो. इसके एक अलावा सेकंड जो हमारे, हाँ एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको बताना चाहूंगा. एंड वेरी गुड यू रेज दिस पॉइंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड डॉक्टर. सी देर आर सो मेनी कंपनीज इन हेम्प स्पेस, दे आर डूइंग D2C आयुर्वेदा. इनफैक्ट दे आर सेलिंग D2C आयुर्वेदा मॉडल में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, विच इज एन अनएथिकल वे ऑफ डूइंग दिस. हमने लास्ट सैटरडे एक इंस्टाग्राम पे मेरे सेशन है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं. वी हैव requested all to complain now, because we have requested many times but people are not listening. And technically a prescription medicine should not be marketed directly to the consumers. That is an rule in India. In 2018 Ministry of Ayush has a documented regulation that no medicine should be marketed linked with the disease or the diagnose or whatever. So वो पूरा clear written है, regulation है. And ASCI, Advertising Standard Council of India, has the guidelines. If anything is going wrong, anybody can complain and they will take an action. I don't want
any company to do that, I request them. See, for example, hair oil, shampoo, definitely it's an OTC. You can market that as an OTC. We don't have any issue. But the internal medicines, which are tablets, capsules, tinctures, they should not be marketed directly to the patient. They should only be promoted through the doctor network. That is the ethical way of doing this business. So on that note, I again appreciate and congratulate Mr. Rajneesh Punji and his team and Hampa Wellness that they are following the ethical model. They are not. They have taken a decision not to promote directly all the medicines which are. They will definitely sell that, and they will sell that only through prescription. अगर prescription नहीं होगा तो वो अपने connect डॉक्टर से पहले आपको कनेक्ट करेंगे, उनसे बात करवाएंगे, आपका कंसल्टेशन होगा, and then you can take the medicines. Without prescription they will not give you the medicines. I think that is the model. Correct me if I'm wrong, Punji. एब्सोल्युटली सर, दैट इज द मॉडल। तो या तो आपके पास में ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन है क्योंकि आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो आप अपलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे एंड देन यू कैन बाय। या अगर नहीं है तो फिर हम आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवाते हैं, एक कंसल्टेशन होगा। अगर डॉक्टर रेकमेंड करेगा, दैट इज द ओनली सिनेरियो इन विच वी सेल द मेडिसिन, अदरवाइज वी डोंट सेल Very इट। good. Great, great. तो Sorry. Next. ये है। इसके अलावा जो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, जैसे अमेजोन पे वी आर डूइंग अ गुड रीजनेबली गुड बिजनेस। वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन टू जियो मार्ट, और भी 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे हम जाने की कोशिश में है। और कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पे भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हम ट्राई कर रहे हैं। बट या आई मीन इट्स आई थिंक इट इज अ जर्नी। हेम्प को हमको कंज्यूमर्स तक लेके जाना है, उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, बिकॉज दिस इज रियली अ मिरेकल प्लांट जो कि बहुत सारा बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को दे सकता है। राइट, थैंक यू सो मच। आई थॉट कि 20 मिनट्स रखने पर डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट वी विल ट्रिम दिस एंड वी विल हैव क्लिप्स आल्सो in between for some particular topic. But otherwise, it was a nice session, Rajneesh, and I really enjoyed listening to you, your knowledge, your thought process, your mindset. I appreciate on personal note as well. And we are looking forward to have many more sessions like this in future also with you, your team, and your associated doctors. Thank you so much for joining us today. Looking forward to have a great event on Saturday as well. And I request again all of you who want to meet me in Gurugram, I will be there. Connect Mr. Rajneesh and his team or my team, and we'll be there from morning till afternoon. So see you all in Gurgaon who are living nearby to Gurgaon. Please meet us on Saturday. Thank you so much. Have a great week ahead. Thanks. Thank you so much. Lovely talking to you, sir.